Hi guys, today is a lucky day for me because I had come on a motorbike to a place called Uttama Palyam, which is near to Dindigul and Madurai. So I had some work in Madurai, and somebody told me that there are some naval NCC cadets who are doing boating around 2 hours away from the place where I was accommodated. That was Hotel Marriott, and so travel all the way from there to this place, which, as you can see behind me, a beautiful place. The agricultural field, then the mountains with the silhouette of the Western Ghat. Also, you can see beautiful, and the lake uh, where they are doing boating is that side. Let's see what all there in store for us, and if I get chance to do some boat pulling, as they say in layman language, it is boat rowing, which we generally do, but in naval language, it is called boat pulling. So there is one motorboat kind of thing, rubber motorboat, and the other one is your wooden boat with wooden rows. I've been told it is very heavy to row with that, and you have to have a lot of strength in your arms. So as I go there, I'll try to speak to the cadets or the instructors also, and try to get the information as to what kind of training it is. But first, the intro music. Okay, so with us is a naval cadet, Yes, sir. Petty Officer Cadet L. Alagaraja. right? So please explain why you are here and the place. Sir, now we are here at Uttambalayam. Here, a small village called Vaikalpatti. We are Vaikalpatti. Vaikalpatti, yes, sir. And we are here for IUC preparation. And this is our 5th day, sir. Fifth day. Yes, so sir. I am late in reaching you by 5 days. Yes, sir. This is our 5th day in preparation for inter-unit competition. We two naval cadets are preparing for IUC, sir. Okay. So in IUC, what happens? There are different units which are participating. Yes, sir. There are 1 TN Chennai, 2 TN Madurai, 3 TN Thoothukudi, Okay. 4 TN Tech Unit from Chennai, Okay. 5 TN Kadalur, 1 P Pondicherry, and 1 Andaman. Okay. Okay. All over units from all Tamil Nadu, Puducherry, Andaman Directorate. Okay. So as part of two naval, you are here. Yes, sir. So two naval will do the practice here. Yes, sir. Then you will take part in that particular competition. Yes, sir. Okay. So that competition is when? Sir, is at Pondicherry and on 12 July, sir. 12 July. Yes, sir. In Pondicherry. Yes, sir. And thereafter, if that competition is won, then you go ahead somewhere. Yes, sir. Sir, after IUC, there are 9 SD cadets and 4 SW cadets were selected for further selection, sir, for All India Nausanic Camp. Okay. In between, there are training 1, training 2, and launch camp. Okay. So ultimately, you go to which place? Delhi. No, sir. In All India Nausanic Camp, we have only 2 destinations. One is Lonavala. Last time we went for Lonavala. Yeah, it's a nice place here. Yes, sir. Lonavala. INS Shivaji. Okay. Okay. This time, I think it is at Vizag. Vizag. Yes, sir. So you are going to best tourist locations, Sir, free of cost. sir, we are going for competition, sir, with our own effort and full of hard work, dedication. You are going with all that hard work, but you are going to a good place. Yes, sir. It's a nice place, sir. I have attended All India Nausanic Camp 2024 at Lonavala. It's a nice place, sir. Nice. The weather, climate, everything is nice, sir. It's near to the Pune. Yes, sir. Okay. Chalo, I will, as we go on, we'll see what happens in the ride. I will speak to the instructor also Okay, sir. and get some details of the boat and the Yes, sir. motor. I think this is motorboat. Yes, sir. RIB, rigid inflatable boat. Okay. And this is 27 feet DK Velar boat. DK Wala. Seems to be in good condition. Yes, sir. Eh? It's pakka new condition, sir. New condition. So how many boats you have got here?
Sir, only one, sir. One boat, 6 oars. Okay. Chalo, that's great. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Nice to meet you, sir. Yeah, same here. Okay, so now we have taken interview of a cadet. He told us something about the camp which they are attending here, about the boating and all. And we also have a instructor here who is in a college, and he is of this local area. So I thought I will just speak to him and he will tell us something about this beautiful place. As you can see behind us, a beautiful agriculture field and the backdrop of the Western Ghats. Yeah, Mr. Anas. Hello everyone, myself Anas Babu. I am working as Assistant Professor of History, Haji Karutrautar Haudia College. This place is known as Kambam Valley. Kambam And Valley. the exact place is Uttamapalayam. This place is Uttamapalayam. Okay. But this area is known as Kambam Valley and it is located in Theni district. Okay. And there are a lot of tourist location here, and this area is very adjacent to Kerala, Idukki district. And if there is a famous river running this side, the river name is Mullai Periyar. Okay. Actually, this river begins from Mullai Periyar Dam. Agriculture is because of that river, but we can say that Mullai Periyar river. And the other tourist places nearby here is Megamalai. Megamalai. That place is around 60 kilometers away from here. Another famous place is, Ramakalmed. Okay. Ramakalmed is a very hilly region and where you can find extreme wind. You can find the wind. That is a speciality of Ramakalmed. Okay, sir. Thank you. Fine. Thank you. Anyway, okay. Thanks. Yes, thank you. Now we'll go for the boating, Okay, sir, and sure, there sir. also Sure, sir. we'll try to take some information about the boating, Boating, and how okay. what they have to do, and the dimension and configuration. Actually, I am not associated with NCC. Yeah. My friend, he is NCC cadre actually. Yeah. We'll speak His to name him. is Sheikh Abdullah. Okay. His name is Sheikh Abdullah. I am working with along him, and I just came As to a see teaching this, staff. As a teaching in staff. the college. Yeah. Chalo. We'll go into the boating and see. what Okay, they sir, are doing. sure. So we are now in a boat. This is called rubber motorized boats for a layman. Here is the instructor of the Navy, and he will tell us the purpose of these boats. This rubber boat and the one which you can see behind me, the rowing boat, wooden one. Yeah. So that is 27 meter, sorry 27 feet DK wheeler. Okay. सर 27 फीट लेंथ एंड इसका वेट है सर 1150 kg हाँ. और इसमें एक ही साथ 5+1 है सर, 5 पुलर्स रहते हैं और एक कॉक्सन रहता है जो कॉक्सन स्टीयरिंग कंट्रोल करता है, जो बाकी 5 पुलर उनको पुलिंग करने के लिए सर. Okay. और ये यहाँ पे स्टावर्ड साइड है, वो पोर्ट साइड है. स्टावर्ड साइड 3 बंदे रहते हैं, पोर्ट साइड 2 बंदे रहते हैं सर. Okay. ये टोटल. और इस बोट का लाइफ सेविंग कैपेसिटी अप टू 20 है सर. अच्छा. 20 आदमी तक लाइफ सपोर्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए तो हम वही 5+1 है सर. हाँ. और ये बोट पुलिंग मेन इवेंट है सर. मतलब मेन जो जितना भी नेवी का है, हाँ. जो बेसिक स्कूल INS चिल्का से लेके हाँ. हर जगह इसी बोट को यूज़ किया जाता है सर. अच्छा. क्योंकि इसी से बंदे को मतलब बोट पुलिंग का मेन ये 2 टाइप का यूज़ होता है सर. एक तो पुलिंग कर सकते हैं और दूसरा इसकी साइल भी लगा के हम साइलिंग भी बना सकते हैं, साइलिंग बोट भी इसको बना सकते हैं सर. तो बेसिक ये है कि विंड पावर के साथ और पुलिंग के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं. ये अभी इसको इनले ट्रेनिंग दे रहा है. ये IUC NSS के चैंपियन के लिए जा रहा है सर. IUC NCC वाला जो. NCC. और मैंने सुना है कि ये जो बोट है ये वही बोट है जो टाइटैनिक मूवी में भी सर या टाइटैनिक के जो एक्चुअल में जो डूबी थी उसमें भी जो बचाने के लिए रेस्क्यू में सर सेम बोट है सर. सेम बोट को टाइटैनिक उसी के टाइम पे सर. पहले इनमें क्या है सर, इस पीछे का मोटर भी रहता था. आजकल इनमें मोटर हटवा दिया हाँ. क्योंकि ये सिर्फ हम पुलिंग के ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. अच्छा. आप अभी भी देख सकते हो एट सी मतलब कुछ मचवा रहा है, फिशिंग पकड़ते हैं, हाँ. उनके पीछे में वो मतलब इंजन रहता है इस टाइप का इंजन लगाता है ना शायद. सर. ये इस अलग टाइप है? का ये अलग है सर. वो अलग है. उसमें रहता है छोटा वाला एक इंजन, वो इनबिल्ट है सर. हाँ. वो अलग से नहीं लगाते जैसे इसको फिट किया हुआ है उस जो फिशरमैन के उसमें वो. सर वही ये बोल सकते हैं लोकल जुगाड़. अच्छा. क्योंकि वो बाहर एक्चुअली लगा देते हैं. हाँ. उसका एक Yamaha 30 HP का रहता है सर. Yamaha 30 ये मेर्कुरी का है, हाँ. वो Yamaha का लगाता है. उसमें साइड एक साइड में लगा देते हैं हाँ. और उससे चलता है.
लेकिन एक्चुअली करना तो उसको जहाँ कॉक्सन बैठा है वहाँ से नीचे अंदर इनबोर्ड में पूरा इंजन को फिट किया जाता है और प्रोपेलर अंदर ही रहता है, वो कंप्लीट इनबोर्ड है, तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके ओके। तो इसका डायमेंशन कितना होता है, कितना लेंथ, कितना सर 27 फीट सर ये एग्जैक्ट। अच्छा। और 1150 केजी इसका वेट है सर। 115 kg। 1150। इसका ओर्स भी काफी भारी है, नॉर्मल जो टूरिज्म वाला है। ये सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिस के लिए और उनकी स्टैमिना बढ़ाने के लिए। तो इनका जो कंपटीशन होगा उसमें भी सेम ही होगा? सेम सर, कोई चेंज नहीं है, सबका यही बोट है, ओर्स भी वही है। तो उसमें सिर्फ रेसिंग होता है या और भी कुछ सर वहाँ पे एट ए टाइम एक लेंथ है सर 1.5 किलोमीटर का, उसमें क्या 3 बोट एक साथ छोड़ते हैं। ऐसे मतलब ऑल ओवर तमिलनाडु को टोटल 6 यूनिट्स है नेवी का, वो सारे 6 यूनिट का अपना अपना सारे टीम लेके आते हैं और उनका वहाँ पे होता है सर पुलिंग। लेकिन उसमें यह है कि सिर्फ टाइम कौन पहले पहुँच रहा है वहाँ से लेके, तो पूरी 6 टीम के बीच में कौन पहले पहुँचेगा, सेकंड पहुँचेगा, तो सिर्फ रेस ही है और कुछ नहीं है? सिर्फ रेस ही है सर। उसके बाद इसमें एक वेला रिगिंग है सर, मैंने पहले ही बोला था, जो हम इसको साइल करके विंड पावर के साथ भी यूज़ हो सकता है, वो साइलिंग भी, लेकिन वो लैंड में करते हैं इसको बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। इसमें वेला रिगिंग बोलते हैं। ओके ओके। वो सेल वेल पूरा रिग करके बच्चों को, उसका भी एक इवेंट है सर इस बोट का। ओके ओके। तो ये कॉम्पिटिशन करके फिर ये जो हाईएस्ट लेवल में कहाँ जाएगा, वाइजैक में जाएगा? सर लोनावाला। लोनावाला सर अभी तमिलनाडु के जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तमिलनाडु से फिर एक टीम को चुनाया जाएगा, वो सिर्फ वो भी 32 बंदे रहते हैं पूरी तमिलनाडु डायरेक्टरेट का। वो 32 बंदे टोटल 17 डायरेक्टरेट आएगा लोनावाला में, उनके बीच में होता है ऑल ओवर सेम आरडीसी जैसे ही नाइसोनिक कैंप। लोनावाला में जो मेन है वो चेंज होता रहता है, एक ही जगह रहता है? सर इससे पहले विशाखापट्टनम में होते थे। कैडेट से पहले बात करता हूँ, बोलता कि लोनावाला में तो, और इस बार वाइजैक में हुआ, ऐसे कुछ बोल। सर 3 साल पहले विशाखापट्टनम हुआ था, उससे पहले चिल्का में होती थी, अभी लास्ट 2 ईयर से तो फिर लोनावाला में हो रहा है, इस बार साल भी लोनावाला में ही होगा सर। ओके ओके ओके। ये जो जिसमें हम लोग कर रहे हैं ये तो मोटराइज सर, ये 1.8 मीटर जेमिनी है। 1.8 मीटर इसका लेंथ है सर। ये जो इंजन लगा हुआ है मर्क्यूरी इंजन है, 30 हॉर्स पावर, 30 HP का हॉर्स पावर है। इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड 40 to 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा। और इसका है सर, नॉर्मली हम 3 ही आदमी रहते हैं इसमें, जो आगे एक पीछे एक और जो मेन चलाता है। लेकिन इसका जो लाइफ सेविंग कैपेसिटी है 10 है सर। अच्छा। इसका लाइफ सेविंग के लिए हम 10 आदमी को बिठा सकते हैं लिमिटेशन में, लेकिन उनका लाइफ सेविंग कैपेसिटी मेन ये है सर, इमरजेंसी पर्पस लाइफ सेविंग के लिए इस बोट को यूज़ किया जाता है। अभी हम इसलिए कि वहाँ पे पुलिंग कर रहे हैं, बच्चे कोई गिर जाए, कोई कुछ भी इमरजेंसी के लिए इस बोट को हम स्टैंड पे उनके साथ साथ घुमाते हैं सर। अच्छा। तो ये इसके और भी कोई वो होते हैं क्या, और भी टाइप के हैं इस टाइप के? सर इस टाइप का बहुत सारे है सर। इसमें ये आउटबोर्ड इंजन है सर, इसमें क्या इनबोर्ड इंजन भी रहता है, वो कंटिन्यूस इस बोट पूरा इसके साथ इनबिल्ट किया जाता है, और सेम जैसे हम गाड़ी चलाते हैं वैसे उनकी स्टीयरिंग रहता है वहाँ पे। अच्छा हाँ, वो स्टीयरिंग के साथ करना वाली मूवी में जैसे। हाँ सर, वो रिब बोल सकते हैं उसको। ये जेमिनी है, वो रिब है सर। इसमें बहुत सारे टाइप का बोट्स है सर। ओके। तो इसमें फ्यूल इससे जा रहा है, इसके अंदर भरते सर हैं? फ्यूल इसके साथ जाता है सर। ओके। ये डिटैचेबल टैंक तो है, ये फ्यूल इसके अंदर है, यहीं से इसी के अंदर ये थ्रू लाइन है सर। इसके अंदर भरने का है क्या? नहीं सर, इसके अंदर कुछ भरने का नहीं है सर, थ्रू ये पाइप ही जाएगा सर। ओके। और जो मैं पहले वाले उसमें गया था, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी, इसमें अगर आप मतलब राइट को करोगे तो लेफ्ट को जाती है सर। और वही है सर, अभी देख लीजिए सर। मैं अभी राइट की तरफ घूम रहा हूँ, ये लेफ्ट की तरफ घूम रहा है, तो अभी मैं ऐसे घुमाऊंगा फिर उस तरफ घूमेगी सर। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर है। मतलब उल्टा है, तो अगर आप ये स्टीयरिंग समझना थोड़ा। हाँ, इनिशियली जब आप चलाते हो तो थोड़ा सा वो रहता है कि फैमिलाइजेशन में टाइम लगता है सर, लेकिन सिर्फ इसमें जिनमें स्टीयरिंग रहता है हाँ। वो सेम है सर। आप राइट घुमाओगे तो राइट जाता है, लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट जाता है, अपना 4 व्हीलर की तरह। 4 व्हीलर की तरह है सर। चलो गुड, चलो थैंक यू फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन। यस सर। चलो थैंक यू।
Yeah. So for the second round, after the rubber motorboat, now we are into the wooden boat. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Hurrah! So how much strength is required? Lot of strength. Yes, sir. Eh? Lot of calories are burning here, sir. Eh? So we have to refill this. We have to take plenty amount of protein and plenty amount of rest. Okay. So how much practice you have done since morning? Sir, we have done totally 7 rounds here, sir. 7 rounds. Yes, sir. Of how much duration? 1 round, it consumes 6.5 minutes, sir. Okay, 6.5. So in this 7 rounds, your muscle would have been made now. Good muscles. Yes, sir. Eh? Yes, sir. Like Sunny Deol. Sir. Sunny Deol muscles. Okay. So this has to be in sync. Yes, sir. Otherwise, the boat will not go Yes, sir. in one direction. No. If there is one mismatch, the boat will start to shake, sir. Okay. So for how many more days you will be here in this? Sir, we will. Nearly 2 weeks. No. We will leave Tuesday, sir. Tuesday. That means 4 more days to go. Yes, sir. Okay. I think slowly your sync is coming on. Everybody is in sync slowly. Yes, sir. Okay. Good Josh. The naval cadets are showing good Josh. Though a lot of strength is required. You can see the strain in their faces and the arms, because these oars itself are very heavy. So rowing this is great difficulty. Though they are taking it in a light manner, but Josh is making them do all the work. Yeah. And this hard work will Yes, sir. pay them off in the competition and in the high level. Yes, sir. Yeah. So it's a good fortune that they're getting to do this boating here, as in other places it is quite sunny, as we were told. Here it is quite breeze and pleasant weather. Good job. Both side give it together. Okay, other than these 1, 2, 3, 4, 5 people, there is one more chap who is here, and I've been told he has got a very important role in managing this boat pulling. Yeah. So what his job is? He's just lazing around, or No, sir. huh? He is a coxswain. Coxswain have to Huh. control both direction and the coordination of the crew. He have to responsible. He is responsible for all man and materials. Okay. So he also manages this steering of the boat also, if you can see this here, like this one. So his job is to coordinate the sync of their rowing and the direction of long the pull purra. boat also, steering of the boat. Yeah, any other job of this guy? Yes, Sir, he is overall responsible for man and material. man and material. Yes, sir. What that means? Man. But all of our life in his hand. So how he will save? He will jump if something happens. He will provide us safety, sir, How? by leading us in correct direction. If he only falls down, then who will save him? We all are swimmers, sir. Only swimmers are allowed to pull, sir. Okay. Okay, only the swimmers will be there in this boat pulling. Non-swimmers will not be allowed. No, sir. So where did you learn swimming? In my childhood, sir, my father taught me. Where? In the lake only? Yes, sir. Or In lake, sir, in lake. lake. And these other, they also in lake only? Yes, sir. You are generally from Madurai or where? Madurai, sir. Madurai. Generally all are from Madurai? Yes, sir. Which college? Tyagarajar College. Tyagarajan. You also from Tyagarajan? Okay. So the main guy which they're saying is the leader also from Tyagarajan. Okay. Great. Good, Josh. Okay, what is that thing? That hook and this thing? This one.
This one? Yeah. Drop kill, sir. This one only drop kill. Yeah, yeah. sir, pull. So what did you tell me? What it was for? Pull, Meant for? pull. Sir, it is used to stable the boat, sir. If the boat was unstable, Yeah. we can use it and stable it, sir. Okay. So it's kind of something that knife Yes, sir. it goes down and then it balances. Yes, sir. So if it is going like this, so It will stable, sir. stable. Yes, sir. So I think generally it must be used when you are doing it in a sea or ocean. Yes, sir. In sailing, mostly used in sailing, sir. Sailing. Okay. Stroke matadra. Yamada stroke matadre. 1 up, Boat side, boat 2 side, give up, it. 3 up, 4 up, 5 up. Pada. Low up, low up, low up. 5 up. Pada. Okay. Let's ask him why he's here. Why is into this hardship? So why you are doing this hard work? You could have relaxed at home. Why you are taking part here? Sir, this is our prestigious issue, sir. This is our prestigious event. One of our prestigious event. Okay. Boat pulling, vela rigging, and drill. Ah. These are our prestigious event. So we have to show what you are made of. Okay. You want to show your mettle Yes, sir. to the world that nothing can beat you. Yes, sir. We are all physically fit, mentally fit, and we are all swimmers. The main point, we are boat pullers. Boat pullers. Yes, sir. So what else is better in Correct. Navy? Sir, What else is better in Navy than in Army? Like, sir, I think both are better, sir. okay. Both are better. So if you had got a chance to go for Army, you would have gone there? Or Sir, I like boat pulling. I definitely go to Navy. Okay. And what about you? Navy. Only Navy. Only Navy? All people? Nobody for Army or Air Force? Sir, Army is better, but Navy is Navy is emotional. Army is better, but Navy is Navy is emotion. That's a good answer. That Navy is emotional feeling. So because of that, maybe I will see this cadet in Navy and then in the white dress. Yes, sir. But now the session of their training has come to end, and mine also. So I think we have covered it well. Yes, sir. And it was a great value for me learning from the cadets, PI, and the local person who told me about this place. Thank you, everybody, Thank you, for sir. the great learning from you people. So I you, sir. close my video here. Yes, sir. So one last Josh. Okay. So what do you say in Josh? Host the Joes! Host the Joes! Who are we? Boat pullers! Who are we? Who are we? Chalo, great. And with this, I complete my video, finish it here. And you people also keep Josh and keep fit. Bye.